මිත්‍ර විභූෂණ සම්මානය පිරිනැමීමේ අවස්ථාව. Your Excellency, අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, දිසානායක ජනාධිපතිතුමනි, රටවල් දෙකේම නියෝජිතවරුනි, මාධ්‍ය මිතුරනි, නමස්කාර, ආයුබෝවන්, वनक्कम। आज राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका මම ඊටම ආඩම්බරයට පත්වෙනවා මේ ගෞරව සම්මානය ශ්‍රී ලංකා මිත්‍ර විභූෂණ සම්මානය දිසානායක ජනාධිපතිතුමා අතින් ලබන්නට හැකිවීම පිළිබඳව මේක මට ලොකු ආඩම්බරයක් මේක නිකන් ගෞරවයක් පමණක් නෙමෙයි මෙය මට පමණක් වන ගෞරවයක් නෙමෙයි ඉන්දියාවේ සිටින බිලියන 1.4ක ජනතාව සඳහා පිදූ ගෞරවයක් වශයෙන් මා විසින් සලකනු ලබනවා ඒ වගේම මේ තුලින් මෙම රටවල් අතර පවත්නා ගැඹුරු මිත්‍රත්වය සහ ඓතිහාසික සම්බන්ධතාවලට ගරු කිරීමක් වශයෙන් මම මේක දකිනවා මම මාගේ කෘතඥතාවය පිරිනමනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට සහ රජයට සහ ශ්‍රී ලංකීය ජනතාවට මා වෙනුවෙන් පිදූ මේ ගෞරවය වෙනුවෙන් प्रधानमंत्री के रूप में මිතුරනි श्रीलंका का මේ यह मेरा चौथा दौर මම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන හතරවන අවස්ථාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් මම අවසානයට ආවේ 2019 වසරේ ඒ අවස්ථාවේ ඇත්තටම මම ආවේ मेरा विश्वास था कि මට විශ්වාසයක් තිබුණා श्री लंकाव नगी सिटीवी කියලා मैं ශක්තිමත් श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापिस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं भारत के लिए ඇත්තටම මේක ආඩම්බරයට කාරණයක් ඉන්දියාවටත් අපිට අපේ වගකීම් ඉටු කරන්න හැකි වෙලා තියෙනවා සැබෑ මිතුරෙකු ලෙස සැබෑ අසල්වාසියෙකු ලෙස 2019 का आतंकी हमला हो ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර 2019 දී කොවිඩ් වසංගතය සහ මෑතකදී ආර්ථික අර්බුදය මේ කාරණා එක්ක අපි සෑම විටම ශ්‍රී ලංකා ජනතාව සමග හිටගත්තා. සියලු අසීරු අවස්ථාවලදී අපි ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව සමග කටයුතු කළා. මට මතකයි තිරුවලවර් මැතිතුමා කියලා තියෙනවා එක්වරක් करिए याबुल नटपेड़ आदू पुल वेणेक्करिए याबुल कातु अर्थात මේකේ අදහස තමයි विरुद्ध सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है फ्रेंड्स राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिशा नायक की भारत यात्रा के बाद से
ජනාධිපති දිසානායක මැතිතුමා ඉන්දියාවට පැමිණීමෙන් පසුව ඉතා හොඳ ප්‍රගතියක් ඇති වුණ අපේ හවුල්කාරීත්වයේ සහයෝගිතාවය තුළ සම්පූර්ණ සූර්ය බල ව්‍යාපෘතිය තුළින් බලශක්ති සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරනවා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඒ වගේම මේ එකඟතාවය සකස් කෙරුණා මල්ටි ප්‍රොඩක්ට් පයිප්ලයින් එකක් සඳහා සහ ත්‍රිකුණාමලය බලශක්ති මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් වැඩි දියුණු කරන්න ඒ තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ජනතාවට ප්‍රතිලාභ සලසා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ වගේම අන්තර් සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ ගිවිසුම අපේ රටවල් දෙක අතර තුලින් අපිට අවස්ථා ශ්‍රී ලංකාවට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා විදුලිය අපනයනය කරන්න මම අද සතුටටපත් වෙනවා රූෆ්ටොප් සූර්ය බල පද්ධති 5000ක් ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික ස්ථානවල සවි කිරීම සඳහා මේ ඒ වගේම අපි යුනික් ඩිජිටල් අයිඩෙන්ටිටි ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙනුත් අපි ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දෙනවා ඉන්දියාව විසින් සබ්කා සාත් සබ්කා විකාස් කියන සාමූහික ප්‍රයත්නයන් තුළින් අන්තර්කරණයෙන් යුතු අභිවෘද්ධියක් සඳහා කියන ප්‍රක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරනවා ඒක අපේ හවුල්කාරී රටවල් වලටත් අදාළයි පසුගිය මාස ग्रांट में बदला है हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा आज हमने किसानों की भलाई के लिए श्रीलंका के सबसे बड़े वेयर हाउसेज का भी उद्घाटन किया कल हम माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और माहो अनुराधपुरा स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का भी शिलान्यास करेंगे कांके संतुरई पोर्ट से आधुनिकीकरण के लिए काम जल्द ही शुरू किया जाएगा श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लिए 10,000 घरों का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा श्रीलंका के 700 अतिरिक्त कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इसमें सांसद न्यायपालिका से जुड़े लोग उद्यमी मीडियाकर्मी के साथ साथ युवा लीडर्स भी शामिल होंगे फ्रेंड हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिसानायक का आभारी हूं रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध है मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में मेरे होम स्टेट गुजरात के अरावली में मिले भगवान बुद्ध के रेलिस को श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है त्रिकोमाली के थिरुकोनेश्वरम मंदिर के रिनोवेशन में भारत सहयोग देगा अनुराधपुरा
महाबोधि मंदिर परिसर में सेक्रेड सिटी और नोरेलिया में सीता एलिया मंदिर के निर्माण में भी भारत सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका में संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। अपने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए राष्ट्रपति दिशा नायक का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद्री बोहोमा स्तुति। Thank you, Your Excellency.